Shri Guru Bhagwat, originally written in Odia language in 9-lettered poetic meter, is a magnum opus by Dr Satpathy on all aspects of the master-disciple relationship. Shri Guru Bhagwat, originally written in Odia language in 9-lettered poetic meter, is a magnum opus by Dr Satpathy on all aspects of the master-disciple relationship. Seldom does any literary creation on the subject touches upon the inexplicable concepts at a micro level, yet with unimaginable lucidity. This means, O Govinda, from your holy feet, honey like nectar always flows. Drinking this honey nectar, the Vraj woman got salvation. The melody of this couplet from the Uriya Bhagwat of Sri Jagannath Das reverberated through author's mind day and night. The sweet embrace of ecstasy through that divine song propelled him to write on Sri Sainath Maharaj 4 lines in the Nabakshari Chand, which means a poetic meter of 9 letters in each line in a couplet. Not only in English and Hindi, but also in many regional languages of India, there seems to be no such book containing the theme of Guru tradition in its totality. This book elaborately depicts the Guru and the basic features of Guru tradition. This treatise contains invaluable aspects of human life like the greatness and uniqueness of Shri Guru, the different levels of Guru, the Guru-disciple relationship, and the importance of rendering services to the Guru. जय श्री साईं। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं।
स्वयं गुरुदेव द्वारा रचित ये ग्रंथ श्री गुरु भागवत साईं भक्तों के लिए गीता समान है। गुरुदेव ने साल 2001 में गुरु भागवत की रचना शुरू की थी। मूल रूप से ये ग्रंथ उड़िया भाषा में लिखी गई थी और आज इसे 8 वॉल्यूम्स में अनुवादित किया जा चुका है। इसमें 34,000 से ज़्यादा पंक्तियां शामिल हैं, जिन्हें अद्वितीय नवाक्षरी काव्य मीटर में प्रस्तुत किया गया है। भारत की पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने श्री गुरु भागवत पुस्तक की सफलता के लिए 2012 में डॉक्टर सतपथी जी को मान्यता और प्रशंसा पत्र दिया। इतना ही नहीं, इस ग्रंथ की लोकप्रियता का जश्न मनाने के लिए भारत सरकार के डाक विभाग संचार मंत्रालय ने उत्कल दिवस पर श्री गुरु भागवत की थीम पर विशेष कैंसलेशन कैशे के साथ एक विशेष पोस्टल कवर भी जारी किया था। जैसा हमने आपको बताया कि ये ग्रंथ 8 भाषाओं में अनुवादित की जा चुकी है। 6 भाषाओं में इसका म्यूजिकल एल्बम भी रिलीज हो चुका है। हिंदी भाषी लोग कई वक्त से ये इच्छा कर रहे थे कि बाबा हिंदी में भी इसका एक म्यूजिकल एल्बम तैयार करें और बाबा ने हमारी ये इच्छा पूरी कर दी है। आज हम सब यहाँ पर श्री गुरु भागवत हिंदी गायन के डिजिटल रिलीज के लिए एकत्रित हुए हैं। नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः ओम साई नमो नमः श्री साई
का परंपरागत स्वागत करने के लिए साई का आंगन की टीम को हम आमंत्रित करना चाहेंगे। मंदिर की संचालिका श्री कुमकुम भाटिया जी, श्री हरजीत छाबरा जी, पूर्णिमा रैना, डॉक्टर संगीता वाधवा जी, accompanied by मालिनी एंड सोनिया। बाबा को पगड़ी पहनाकर परंपरागत स्वागत करेंगे श्री कुमकुम भाटिया जी। बाबा को अंग वस्त्र से सम्मानित करेंगी छाबरा आंटी। पूर्णिमा रैना जी बाबा को चंदन लगाएंगे। और पुष्पों से स्वागत करेंगी डॉक्टर संगीता वाधवा जी। श्री गुरु भागवत गुरु परंपरा की मूल विशेषताओं के साथ गुरु के प्रति समर्पण के विषय को विस्तार से दर्शाती है। इस ग्रंथ में मानव जीवन के अमूल्य पहलू, श्री गुरु की महानता, गुरु के विभिन्न स्तर, गुरु शिष्य संबंध, विभिन्न प्रकार के शिष्य, गुरु को सेवाएं प्रदान करने का महत्व और अंधविश्वास सिद्धांत जैसी अवधारणाएं हैं। अब देखते हैं गुरु भागवत पर एक शॉर्ट फिल्म। Shri Guru Bhagwat, originally written in Odia language in 9-lettered poetic meter, is a magnum opus by Dr Satpathy on all aspects of the master-disciple relationship. Shri Guru Bhagwat, seldom written in Odia language in 9-lettered poetic meter, is a magnum opus by Dr Satpathy on all aspects of the master-disciple relationship. Seldom does any literary creation on the subject touches upon the inexplicable concepts at a micro level, yet with unimaginable lucidity. This means, O Govinda, from your holy feet, honey like nectar always flows. Drinking this honey nectar, the Vraj woman got salvation. The melody of this couplet from the Uriya Bhagwat of Sri Jagannath Das reverberated through author's mind day and night. The sweet embrace of ecstasy through that divine song propelled him to write on Sri Sainath Maharaj 4 lines in the Nabakshari Chand, which means a poetic meter of 9 letters in each line in a couplet. Not only in English and Hindi, but also in many regional languages of India, there seems to be no such book containing the theme of Guru tradition in its totality. This book elaborately depicts the theme of devotion towards the Guru with the basic features of Guru tradition. This treatise contains invaluable aspects of human life like the greatness and uniqueness of Shri Guru, the different levels of Guru, the Guru-disciple relationship, and the importance of rendering services to the Guru. Inspired by these verses, many groups and organizations have taken up the task of taking Shri Guru Bhagwat
to people in India and abroad. माया विच हर जीव फसे रखिया लई बेनती करे श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव रोग चिंता ते पवता शोक दर दर ते अनुता इसका एक विवरण प्रस्तुत करने के लिए मैं अनुरोध करूंगी मिरांडा हाउस से रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिंदी मिस उर्मिल सिंह जी से। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर बाबा आपको हम सभी की ओर से श्रद्धा युक्त प्रणाम। आज मुझे संत कवि दादू की पंक्तियां याद आ रही हैं। भव सागर में डूबता सदगुरु काढ़े आए, दादू केवट गुरु मिलिया लिए नाव चढ़ाए। यह श्री गुरु की अहेतुक कृपा ही है जो उन्होंने श्री गुरु भागवत रूपी नौका बनाई है। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि आज यहाँ हम सब श्रद्धेय डॉक्टर सतपथी जी, जिनका महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व सुविख्यात है और जो अनवरत अनगिनत लोगों के जीवन को संवार कर उन्हें राह दिखा रहे हैं, उनके द्वारा रचित एवं संगीतबद्ध श्री गुरु भागवत की प्रथम प्रार्थना के हिंदी गायन के डिजिटल म्यूजिक एल्बम के लोकार्पण कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। मूल ओडिया से इसका हिंदी काव्यानुवाद भी गुरुजी डॉक्टर सतपथी जी द्वारा ही किया गया है। यह प्रार्थना गुरु भक्ति का सार है। इस एल्बम में अनन्या साहिबा एवं आकांक्षा पिडिया द्वारा मधुर गायन और शुभांग द्वारा गिटार वादन किया गया है। इस एल्बम को बनाने में मनीषा एवं वशिनी का भी विशेष सहयोग रहा है। कुछ ही समय पश्चात यह हिंदी म्यूजिक एल्बम स्पॉटिफाई, अमेजॉन म्यूजिक आदि जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। श्री गुरु भागवत में निबद्ध इस प्रार्थना के संगीतबद्ध सेट के अन्य भाषाओं में भी लोकार्पित हो चुके हैं। 7 भाषाएं और भी हैं जिनमें निकल चुके हैं, जो कि टाइम्स म्यूजिक, सारेगामा आदि जैसी बड़ी म्यूजिक कंपनियों द्वारा तैयार किए गए हैं, जिनमें शारदा सिन्हा, हर्षदीप कौर, एस चांकी जैसे विख्यात गायक गायिकाओं द्वारा गायन किया गया है। यह प्रार्थना गुरुजी डॉक्टर सतपथी जी द्वारा मूल रूप से उड़िया भाषा में रचित इस युग के महान ग्रंथ श्री गुरु भागवत के चंद मोती हैं। वास्तव में अब हिंदी बेल्ट बहुत बड़ी है और करोड़ों हिंदी भाषी लोगों की आत्मा को झंकृत करके आज इस जगती के कोलाहल में यह म्यूजिक एल्बम उन्हें सुकून देगी और एक नए संगीत से उनका आस्वादन कराएगी। जैसा कि अभी कहा कि ये जो गुरु भागवत है, जिसका कि प्रथम प्रार्थना के जो कुछ भाग हैं, करीब 34 छंद हैं जो कि इस म्यूजिक एल्बम में है। वास्तव में ये गुरु भागवत सन 2001 में, जैसा कि नंदिता ने अभी आपको बताया, कि कार्तिक पूर्णिमा की मध्य रात्रि में भाव स्मृति से स्वतः निसृत इन छंदों को जब गुरुजी डॉक्टर सतपथी जी ने लिखना आरंभ किया, तब उन्होंने इसे ग्रंथाकार में प्रकाशित करने के विषय में सोचा भी नहीं था। वर्षों बाद सन 2010 में इसका प्रथम खंड प्रकाशित हुआ। सन 2020 तक आते आते इस ग्रंथ की 34,000 से भी अधिक पंक्तियां लिखी जा चुकी हैं। हालांकि इसका उल्लेख किया गया है, लेकिन किसी महती बात की जो चर्चा है वो बारंबार सुख देती है। वास्तव में अब तक इसके 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। वेदों, उपनिषदों से लेकर
शैव, बौद्ध, वैष्णव, संत, सूफी परंपरा में अब तक किसी रचनाकार ने गुरु तत्व की काव्यमयी इतनी सर्वांगीण अभिव्यक्ति नहीं की है। इस महत् ग्रंथ में 750 से भी अधिक शीर्षकों के अंतर्गत गुरु तत्व का विषय विवेचन किया गया है। समय सीमा का ध्यान रखते हुए उन सभी का उल्लेख कर पाना संभव नहीं है। साथ ही इसमें स्तवक समेत 64 प्रार्थनाएं हैं। इस ग्रंथ में विश्व के सभी आध्यात्मिक गुरुओं की मूलभूत मान्यताएं सार रूप में समाहित हैं। इसमें गुरु परंपरा के सूत्र में प्राचीन युग से लेकर वर्तमान तक भारत में प्रचलित विभिन्न धार्मिक परंपराओं को मोतियों की भांति पिरोया गया है। जब डॉक्टर सतपथी जी ने इस पर चर्चा की, उन्होंने कहा था कि पौराणिक चरित्रों का जो वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है, जगन्नाथ जी ने उसका उड़िया में अनुवाद किया था और चरित्र का वर्णन करते समय उन्होंने अपनी भावधारा को भी उसमें मिला दिया था। किंतु गुरु भागवत उस प्रकार का ग्रंथ नहीं है। गुरु भागवत में नाम लिए बिना गुरु एक व्यक्तित्व है जिनकी आज भी जरूरत है। उनका चरित्र, उनकी कार्यशैली, समाज के प्रति उनका अवदान जो पहले से था वही अब भी है। भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन करने के लिए भी इसमें बहुत से उपादेय विषय, जैसे कि अंधविश्वास से मुक्त होना, परिवर्तित परिस्थिति में परिवार की क्या आवश्यकता है, जिन परंपराओं के आधार पर हम प्रतिष्ठित हैं आज उनका लोप हो रहा है क्योंकि समय बदल रहा है। गुरु भागवत के माध्यम से आगामी पीढ़ी को एक दृष्टिकोण देना भी गुरु जी डॉक्टर सतपथी जी का महत् उद्देश्य है। इसीलिए इसमें आदि गुरु माता पिता पर भी स्तवक लिखा गया है जो बहुत ही मार्मिक है, जो इतिहास में कहीं नहीं लिखा गया है। अभिशाप और आशीर्वाद के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि जो पात्र नहीं है, जो झूठा है, पैर छूकर उसका सशक्तिकरण करने की आवश्यकता नहीं है। अपने जो गुरु माता पिता हैं उनके पैर छूइए, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहते हैं कि आपका दर्द माता पिता समझें, पर उनका भी दर्द आप समझते हैं क्या? गुरु जी डॉक्टर सतपथी जी का कहना है कि जो केवल अपने दर्द को समझता है वह कभी भी भक्त नहीं हो सकता। आज श्री गुरु भागवत जन साहित्य का रूप ले चुका है। वह लोगों के हृदय को छूता है। सबको लगता है कि यह उनका संगीत है। उन्हें लगता है कि उनके जीवन की अनकही बातें इसमें स्पंदित हैं। अब तो विभिन्न राज्यों में गुरु भागवत का नियमित सामूहिक पारायण भी किया जाता है, जिसके विषय में नंदिता ने भी उल्लेख किया है। YouTube पर भी विभिन्न भाषाओं में श्री गुरु भागवत के अंश प्रसारित होते हैं। इस ग्रंथ के अब तक 16 से अधिक विभिन्न भाषाओं के अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं, जो कि इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। आज ये घर घर में एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में पूजित है। सब दायित्वों का निर्वाह करते हुए, सबको इतना कीमती समय देते हुए बाबा, आपने इतने ग्रंथों की रचना की है। अब तो इस पर आश्चर्य भी नहीं होता है, क्योंकि आश्चर्य में अविश्वास छिपा होता है। ईश्वर ने मानवता पर अनुकंपा स्वरूप आपको इस महत् कर्म के लिए चुन लिया है। गुरु भागवत के छंद शब्द हैं। वर्षों पहले आपने बताया था कि दिव्य भाव जो आसमान या अदृश्य जगत में होते हैं वे शब्द कहलाते हैं। इसीलिए गुरु भागवत का हर छंद दिव्य भाव से अभिभूत कर देता है, जैसा कि आप विभिन्न म्यूजिक एल्बम्स के द्वारा भी इसका अनुभव कर चुके होंगे। यह संगीत हृदय में गुरु और ईश्वर को एक कर देता है। बाबा, मैं आपके ही समक्ष आपकी ही कविता को उद्धृत करने का सुसाहस कर रही हूँ, क्योंकि इस कविता से आपकी अभिव्यंजना का भी रहस्योद्घाटन होता है। शब्द की बातें करते हैं ज्ञानी, शब्द का ध्यान करते हैं मुनि, सच्चा शब्द उसे ही समझो, गुरु मुख से निकली जो वाणी।
गुरु विधाता का है देह रूप, सदा सत्य है गुरु की बानी, वाक्य उनका है आदेश प्रभु का, जो न समझे वो है अज्ञानी। लाते हैं गुरु आसमां से शब्द, भक्ति का बीज बोते हैं ज्ञानी, शब्द से सबको पास खींचकर पालते हैं सींचकर कृपा का पानी। और इसीलिए आज आप सबको बाबा ने यहाँ खींचा है आप पर अनुकंपा करने के लिए। थैंक यू उर्मिल जी। तो हमने आपको बताया कि गुरु भागवत को 6 अलग अलग भाषाओं में एक एल्बम का रूप दिया गया है, म्यूज़िक एल्बम का रूप दिया गया है। और अब मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगी कि गुरु भागवत हिंदी गायन का डिजिटल रिलीज़ करें। बाबा। आज का ये कार्यक्रम गुरुदेव के सानिध्य में बने सभी साईं मंदिरों में लाइव टेलीकास्ट भी किया जा रहा है। बाबा ने ये म्यूज़िक एल्बम रिलीज़ किया है। इसको आप स्पॉटिफाई, अमेज़ॉन म्यूज़िक, यूट्यूब म्यूज़िक, एप्पल म्यूज़िक समेत सभी म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। हम आज साईं का आंगन में बैठे हैं। दिस इज़ नॉट ओनली अ टेम्पल बट एन इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ। यहाँ बाबा के प्रशिक्षण और संरक्षण में कई बच्चे बड़े संगीत और संस्कृति का अभ्यास करते हैं। प्रस्तुत हैं इन्हीं में से कुछ बच्चों द्वारा गुरु भागवत गायन पर एक डांस। प्लीज वेलकम अहाना एंड ग्रुप। भाई तुम्हें लेवल भी कम करना है। रोग
अधीरा शांत पंडित पास दौड़े रहे, दान व दक्षिणा देते रहे। मंदिर में सारे दुखिया जन व्याकुलित मन से करे क्रंदन, व्याकुलित मन से करे क्रंदन। श्री गुरु मेरे प्राण सदा खोजे चरण तेरे, प्राण सदा खोजे चरण तेरे। श्री गुरु भागवत का ये मधुर अंश आपने सुना। गुरुदेव ने गुरु भागवत हिंदी के पहले भाग की प्रथम 34 चौपाइयों को अनुवादित और संगीतबद्ध किया है। इसका एक छोटा सा अंश आपको सुनाते हैं। श्री गुरु मेरे प्राण सदा खोजे चरण तेरे, चरणों में जब ध्यान लगाऊं, अंतर मन में एकाग्रता पाऊं। श्री गुरुदेव श्री गुरु मेरे प्राण सदा खोजे चरण तेरे, चरणों में जब ध्यान लगाऊं, अंतर मन में एकाग्रता पाऊं। अन्यथा माया जो खेल करे, जग जंजाल मुझको घेरे। इस खेल में थक हार कर पुकारूं, हे प्रभु रक्षा कर। रोग दुश्चिंता भवता, दुख दारिद्र अनुताप, एक से दूजा है बलवान। रौंद के जीव को करे हैरान, रौंद के जीव को करे हैरान। श्री गुरुदेव श्री गुरु मेरे प्राण सदा खोजे चरण तेरे, चरणों में जब ध्यान लगाऊं, अंतर मन में एकाग्रता पाऊं। गुरुदेव श्री गुरु मेरे प्राण सदा खोजे चरण तेरे, प्राण सदा खोजे चरण तेरे। गंगा नहा के रखते व्रत, पूजन करते हैं विधिवत। सारा जीवन करते रहते, फिर भी दुख झेलते रहते। भक्तन के हे प्राण आधार, भक्त के कारण लिए अवतार। संधि काल जब भक्त गाए, कृपा खेर आपका शुरू हुए, कृपा खेर आपका शुरू हुए। श्री गुरुदेव श्री गुरु मेरे प्राण सदा खोजे चरण तेरे, प्राण सदा खोजे चरण तेरे।
सुन सकते हैं। और अब हम अनुरोध करेंगे हमारे गुरुदेव श्री गुरु भागवत के रचयिता डॉक्टर सीबी सतपथी जी से आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। Hello. Jai Shri Gurudev, Jai Shri Sai. Since we are online, welcome all here and welcome people in those 15 countries around. Especially here, our senior diplomats from Mauritius, Suriname, Netherlands and UK for joining us in this cultural venture which gives better understanding of each other. Understanding each other's culture is what Swami Vivekananda had said in 1893 in the Chicago World Conference. We must respect and accept the best of the culture of others. We must respect and receive the best of other cultures when maintaining our originality. It's a very loaded sentence. Swamiji had said, "You are the first Indian saint or monk who went beyond the country for bridging the gaps between nations." I spoken that at Washington, Seattle and at also Washington DC about this. Today, we are celebrating. Why? Because today is a day, auspicious day for celebration of Guru Purnima. The word Guru is very heavy for Indians over the last 4,000-5,000 years. We attach a divinity to the word, a higher value to the word, to Guru, a teacher, than what we can add to the word called mentor, which is usually a teacher, specialized mentor. And today, as per the Hindu calendar, that is lunar, not is Guru Purnima, the full moon day in which over a few thousand years this day is being celebrated. In the name of an ancient Guru who almost created the first epical history, second epical history called Mahabharata, Vyasadeva. Therefore this is named as Guru Purnima or Vyasa Purnima. It's very apt that all these he created Puranas, Mahabharata. He was a part of the role played in the Mahabharata war. He is given the honor, and following which we all are gathering to celebrate Guru. This word again, we have very big spiritual masters here. We had big institutions which taught in Takshila, BC. We had Buddha in the 6th century AD and Jaina. The preachers, religion part is separate. They are preachers basically, besides. They taught the humanity not in classrooms. They taught the society and absolute good deliverables in the sense what they taught converted the society. When we are saying a guru,
We are not meant for class teacher on paid salary or on tuition fees. We mean by Guru who can change the inner minds, even social orders. That's our. This is number 2. Earlier times, 3,000 years, 2,000 years, kids used to go at about the age of 5 or 7 to the Gurukula ashram and stay there till the age of 16 or something and learn anything and everything from the master who was like God to them. They taught everything. Even the parents should do nothing at that time. There's a complete, comprehensive, totality, holistic education system. The word is coming from there. Now with the process of time, this has been diluted because today they are hostels. You don't know to Gurukula Ashramas. You could name it very properly, reflecting your ancient deity. Good. So, this book is Guru Bhagwat. In this context, Shri Guru Bhagwat means, what is Bhagwat? Bhagwat is one of the Puranas, called Hindu scriptures. That gives the epic of Bharat, like Homer and Iliad in other countries, somewhere, as you can see, Spartan and Roman wars, you can say. But ours is Ramayana, Mahabharata. What is said, what is heard, what is remembered by hearing, not written. When written was not there, there was written on the Granthis, but they trained people to remember memory. That was so that it is not destroyed. Even if somebody attacks and annihilates, like Tashila, our university was annihilated. It's a big Saranath again. One of the conquerors do is annihilate the culture. One of the best things is like Alexandria, they killed the library itself. So Guru Bhagwat, in short, is the character of a guru or a teacher, not only for Hinduism, not only for the teacher, master. It is for universal standards of the world. What it should be. What is the universal standard? What should we expect? Let us say, in foreign countries also, let us say, why don't they have this divine part of it? What is the best teacher exactly? I was seeing the video at Harvard University or Washington University. What do the teachers do? How do they teach? How much they give to life? They may not be teaching divinity. The professor of philosophy did not teach divinity. But what they give exactly, how much commitment is the thing? Imagine some teacher. Now let me make first one differentiation which people will. When you are talking of a spiritual guru and when you are talking guru of the modern times, we are differentiating. Some people think that science is against philosophy or spiritualism, which is absolutely wrong. You cannot see a society which science is ruled by some divinity and spiritualism is some divinity, temples run by somebody, NASA run by somebody. That's not all. It is totality of energy form working through various methods. We have done yoga, we did yajna. Today God is revealing more through science. Because anything I am telling you, anything you are hearing, science, why don't you admit that today we are saving because of medicine? Why don't you let's be human beings at all? So, this Guru Bhagwat, while apotheosizing the characters of a guru, of the ancient deity, is also trying to bring out the changes that are necessary in approach to the subject. You have to. Shortly before this, I had beautiful experiences of having one in Bhojpuri language. Bhojpuri is a side language. It's a Bihari language. It's very popular. And for your information, I think 19th century, 1873 or something, people went to Mauritius, Suriname, and many 3-4 countries, Fiji Island and somewhere else also. They stayed there. I think in Suriname it is a very popular language and people know. So once you know Bhojpuri, Hindi is known, and because of national language, 50 crore people knows Hindi states and the rest of the India knows. Supposed to national language. So when I am doing this,
I've released recently, I think Bengali something, and then I'm going to do Kerala book, and here it will be done. All other language, I have 1980 language, I know so many here and anyway, everywhere. USA. The first Guru Bhagwat book was published, yes, just told you. But for me, the first exposition of Guru Bhagwat was in Seattle, in the radio, for about 2-3 years. Devdat Das, if you are in Seattle sitting, I am sure you are there. You did that job. It was a good job. Then we went to, it is Australia and New Zealand, and I think some places in Europe. I think Africa also we went. Anything that is human, a common concern of an individual, will touch everyone. A mother rearing a child is common anywhere in the world. That mother-child difference in birth will not be different in any religion, any culture, anywhere, cannot be. The fundamental principles of growth and survival, sustenance. And what is for a society the best? What do we live on? Society, country, nation, culture, music, literature, they are all combined. You cannot separate them. Our forefathers gave it. We are carrying it forward. We made a little changes for the necessities of time. Of course, you have to. I cannot start a didactic poetry here like Chaucer and Dryden, and that cannot happen because you won't understand that. Not even Shelley Byron and kids. That they are very beautiful literature. I have got books of 1700 something, handwritten from Files Company, 1900. It was established 1904. Handwritten books, handwritten. तो जो गुरु भगवत पे बात कर रहा हूं मैं, यह हमारे सम्मानित अतिथि को परिचित करते हुए, ये एक प्रेरणादायक, it emphasizes 3 things. First, don't go for blind faith. Clean your mind of certain blind faith do you have. 1. Number 2 is be grateful to the growth and evolution of a society, including culture and of course the parents. My presumption is Indian society and allied Indian society survive because of the family state. We are proud of it and we are sure of that's our strength. Little change is coming, but no. Still then, it is very much there. Even in these countries in which, when Mauritius, Fiji, all these countries, they have that backdrop that sustains. My question here was what I've written. Surprisingly, I've written a prayer for the parents, not God. We have written enough for prayer, Lord Jagannath, I have become Puri. But they are the agent for giving birth, life for us. If we neglect them, how do you learn how to be grateful to anybody in this earth? The highest level, minimum taken is parents. And if you have not learned how to be grateful and hold their hands in old age, then what sort of a gratefulness and quality can you have tomorrow? That is testing. House is the testing ground even of the quality of the children that grows there. Therefore, a prayer for parents. Why not? We pray bosses, we pray heroes, we play, why not? Second, how grow the society together? In India it is possible. Let me tell you one thing. And third thing is futuristic change. I have said the children should be given enough of opening for adapting to the futuristic change, because my generation doesn't know much of things, cannot say we must stop it. Rather than I have said, our generation have to exchange program with our own children. We tell them what is ethical, let them tell us what is computer. We don't know. At least I don't know much of it. I am telling you, this generation need to have adult education, certain things. The world is fast changing so fast. To catch up to it, you have to learn yourself to guide your children. That's my clear-cut understanding of the issues. Where we falter? Yes, we did falter.
Because when computers came, cell phone, we gave to the children. Suppose I get equipment. My generation created science. Okay. I'm 76 plus. My later generations could be. Then I create an equipment, give it to the child. I don't know how to operate it. I don't know what can be the negative use of it. Then when child uses it with its own intelligence, I won't blame it. That's ridiculous. If I give a thing, I must know what is right and wrong and learn it myself and guide it. I don't know. I presume everything must be or A or not A, or A, not A, because I don't know what possibilities are there. So how to adjust the families and society to the coming changes? Like for example, this corona, what happened in India? We had much less deaths. Why? Yes, well, I've written in that all this. That is because the moment corona came, government declared, we all went into our houses. Houses there. Child, mother, child, everybody did homework. And nobody took food outside. Like morning breakfast there and some hotel there, and go and handshake and have your food. In those countries, that was not possible. We managed it at home. Everything at home, just confirmed. Puja, Path, everything. Where they were compulsory to go out, they didn't have the system, they got into trouble. I've written a lot on that. No offense is made, but that's what our family gave. And also got the adjustment between parents and the children very sweetly to face disaster tomorrow. How to face disaster of the family. That's one issue. Also, every religion lives, every society needs some people to lead. You call it a guru, a leader, anything, any epithet you use doesn't contradict the requirement of a society of a leader. That is always absolutely. A leader is a necessity, and that leader you can call guru because he leads the society not only in the rational world, sometimes in the physical world, sometimes in the emotional world. And some of them actually, in leading the society, bringing those change, were hanged like Raj or Gandhi. Those who get change sometimes get hanged. They take upon themselves the price of a change. Martin Luther King, I'm going there, I'll be there, Seattle, 7 days later. So that is what is. So Guru Bhagwat is giving a realistic approach for today's society and children. यही इसका कार्यक्रम है और कुछ नहीं, इसको पढ़ेंगे, संगीत के साथ अच्छा लगेगा. हमारे तीनों बच्चों ने बड़े अच्छे गाए हैं, 5 को हम लोग सम्मानित भी इनको करेंगे. और हमारे यहाँ का एक परिवार जैसे संस्था है, परिवार में कोई किसको एक प्राइस दावी नहीं करता है, सब एक दूसरे के सहयोग के साथ मिलजुल कर इसको एक समरस से, समभावना से इसको सफल करते हैं. यहाँ पर बैठते हुए मुझे आज 23 साल पहले जब मैं शुरू किया था कार्यक्रम लिखने का, क्योंकि सारे भाषण आप देखेंगे गुरु भागवत को भागवत टुंगी बन गया. व्हाट इज टुंगी? ए बिल्डिंग्स, प्लेसेस only deployed, only created organizations only for Guru Bhagwat in USA. I think we got in Seattle, we are getting it Bay Island, we got Minneapolis, many places that is already there. India is full of it. How does it come? Why do people, we don't go for any advertisement, sorry, I am not believe. And I am not believing in taking any foreign dollar for your advertisement, for any, no help is necessary. Our people 5 rupees will do. No help, foreign help is necessary for us out in my life. No. If they are not competent to build their own structure, 5 million rupees and depend on some aid, then they cannot go. That's not a business or a corporate sector, government sector. This is human sector or emotional sector. That's what has been also told. Very clear. So, इसीलिए मैं आप सब जो लोग देख रहे हैं, मैं इसे करूँगा. ठीक है, आपको देश में फंड रेजिंग हो सकता है, हमें आवश्यकता है नहीं. यहाँ पर भावना रेजिंग की आवश्यकता है, उससे बहुत अच्छा हो जाएगा. और हम लोगों ने ये जो एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइफ, जैसे मैं एक्सपेरिमेंट विथ लाइफ दिखाता है कि आप अगर इफ यू डोंट क्रिएट, मैं आई हैव रिटन देयर, वी क्रिएट सर्टेन बर्डन ऑन आवरसेल्व्स. If you are out of that burden, Guru Bhagavad says, you are much better.
Why who is a guru? Who is a character in a book? Like let us say the book becomes a guru, because in Sikhism, when Guru Gobind went away, the book became the 11th guru. Then say we don't want a human physical guru. So the books teach us much more as is necessary. We have our epics, our gurus, already books are there. Ramayana and Mahabharata, we learn from that. So it would be better to understand. And let me tell you, I think I have a session at Chicago on this issue. I'm going for issue on the 7th or 8th. Anywhere in the world, like a mother and child, relationship is a constant anywhere. So a teacher and student has a constant relationship. Little change with time, where you add a little support and hold hands. When you learn from the student to hold his hand properly. That is all that I have to. Thank you very much. I'm delighted you are all here. मैं बड़ी खुशी हुआ कि आप लोग सब यहीं पर मौजूद हैं. विदेश में जो लोग देख रहे हैं, ठीक है. Online सारे मंदिर, he reminds me how many temples are seeing or whatever they sing. मैं सब लोगों को भारत और भारत बाहर में जहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, सैकड़ों संख्या से, in hundreds, I don't know what number, धन्यवाद दे रहा हूँ कि इस कार्यक्रम में आप लोगों ने सम्मिलित होकर दूर दूरांत में समय निकालकर, टाइम जोन भी अलग अलग है फॉरेन कंट्रीज में, उसको पार करके जो इस इवेंट में आप लोग सम्मिलित हुए, आपका सम्मिलित होना ही हमारे लिए प्रोत्साहजनक है. It is inspirational and gives us support to the cause for which you are standing, because that cause is for generations, that cause is for children. If the children don't learn these things for today, in the fast changing economy or fast changing world system, then there will be no guru. The gurus will fail and the students will go their way. Then don't blame them. With this word, thank you, Mausi, and thank you all of you. Nandita, thank you the singer, dancer, all those who gave me something. And anybody, जो काम किया है, small or big, I don't want to, I can name it, there are too many of them. It's a family, so told or not told, anybody who has laid a hand. Thank you very much, and thank you our senior diplomats sitting here. They are delighted to see you all. You are with our cause and we shall be with your cause, cultural cause. And our very senior IS, IPS officers are there, government of India, and businessmen, all sort of, and few doctors who not. So that's not the issue. Issue is a cause and the acceptance of a cause, working for a cause, and getting into excellence, enabling others. Thank you. Jai Shri Sai, Jai Shri Gurudev. थैंक यू बाबा. और जैसा कि गुरुदेव ने कहा कि गुरु भागवत हिंदी गायन बनाने में साईं का आंगन के ही 5 बच्चों ने बहुत योगदान दिया है. एक एक कर हम उनको यहाँ बुलाएंगे और बाबा उन्हें आशीर्वाद देंगे. साहिबा ऋषिराज. 3 बच्चे, 2 बुजुर्ग. Children sang, 3 children. All our own product. We don't have to go professionals at all. We do it. And 2 leaders. Aja. Sahiba is one of the singers. She's one of the best singers. She's a Sikh girl, but we don't differentiate any here. Jain is Sikh, we don't. They are all cultural. When culture comes, that's all, Indian culture. Ananya Sharma. This is Kashmiri. Come on. This is Maharashtrian. And this is UP8. Akansha. मौशमी चक्रवर्ती. मोनिशा शर्मा. शुभांग मुंजाल.
And before we move forward, we would like to thank our guest from overseas, High Commissioner of Mauritius, Mr. Heyman Doyle Dillam. Thank you for being here, sir. Ambassador of Suriname, Arun Haridinji and his family. Senior Trade and Investment Advisor at British High Commission, Divya Divakaran. Thank you so much for coming. I would now invite our own Mosi, Kumkum Bhatia ji, to present the vote of thanks. Jai Shri Sai, Baba Pranam. I extend my heartfelt thanks to the esteemed guests who are amongst us. Each devotee who is physically present here, as well as those who are watching virtually, for making this program so special. Today, on the very pious, special day of Guru Purnima, I would like to steal a few moments from the audience to go up to Baba and offer this scroll to him on behalf of all of us. The labor of love. Dreamt words trickled on paper in the wee hours of the labor of love. It was the first year of the 21st century. Dreamt words trickled on paper in the wee hours of the Kartik Purnima day. Dearly composed, soon grew to volumes of couplets. We read them with regard and joy and followed steps of the guiding texts. The magnum opus was put to tunes, blessing us and the coming generations. It is now also digital today, keeping pace with technical innovations. Two 58 messages already. Imagine, you'll handle it. No words will be able to express the sentiment we feel today. As we all know, Sri Guru Bhagwat has been written in Oriya originally, and besides Hindi and English, is now available to us as many as 13 regional languages too. Today, once again, we thank you for making available Sri Guru Bhagwat GAYAN in Hindi, which has come so melodious. Surely every devotee will start humming it soon. Once again, I thank all present amongst us and request everyone to proceed for Sai Ka and Guru Ka Langar. Prasad. Thank you all. Jai Sai Ram. सभी साईं मंदिर जहां पर इस कार्यक्रम की लाइव टेलीकास्ट हो रही है उनको हम बताना चाहेंगे कि ये म्यूज़िक जो है स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूज़िक, अमेज़ॉन तमाम म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। इस कार्यक्रम के बाद आप अपने अपने मंदिरों में ये कार्यक्रम रिलीज़ का कर सकते हैं। थैंक यू बाबा। जय श्री साईं। I think most of the places in India, 40, 60, 70, 80, I don't know other countries, they are simultaneously seeing this and doing its next program in all places. And 80 places in India, I think, for in some countries. Thank you all.
कृपया बाबा को जाने का मार्ग में हमारे गणमान्य गेस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये सभी डांसर्स बाबा आपके साथ एक फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। इतना खूबसूरत नृत्य इन्होंने पेश किया। बाबा एक फ़ोटो बाबा इन लोगों के साथ प्लीज़।